Om. Om. Rub your palms and place it on your closed eyes. Complete darkness is there. In this darkness, you open your eyes, give a light massage to your eyeballs, and let the light in very slowly. सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यू आर ऑल वेलकम। प्लीज पुट ऑन योर कैमराज। Good evening, sir. Good evening, sir. And if you have any questions, you can ask me now. This is your time. अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये अब आपका समय है। सर, हमने जो ये कल जो प्लॉटिंग किया, एनर्जी का डिवीजन किया, तो अभी मेरे समझ में इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, पर इट इज वो लेवल 1 लेवल 2 करेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा ना सर? नहीं, इसमें इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हमने जितना Okay. बताया दैट इज सफिशिएंट। ओके सर, ओके। अभी फिर से सुनिए सो दैट सम क्लैरिटी कम्स टू यू। प्लीज लिसन। यस। किसी भी शरीर के किसी भी भाग में मान लो कोई बीमारी है, चोट लग गया, जल गया, खुजली हो गई, सोरियासिस हो गई, चोट कुछ भी हो गया, नहीं, एक कान में दिक्कत है, एक आंख में दिक्कत है, एक ब्रेस्ट में दिक्कत है, नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो कहने का मतलब है कि आप पूरे शरीर को आप ट्रीट करना चाहेंगे कि आप केवल उस छोटे से एरिया को ट्रीट करना चाहेंगे? पहले ये समझिए। छोटे से एरिया को। हाँ, अगर आप समझ गए तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं। छोटे से एरिया को क्यों? ताकि ज्यादा प्रभावी और स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट वहां जा सके। तो अब सवाल ये होता है कि हम उस एरिया में जाकर के वहां पर कौन सी एनर्जी कम है या कौन सी एनर्जी ज्यादा है, यिन ज्यादा है कि यांग ज्यादा है, नहीं, चीज ज्यादा है या कम है, बीमारी के दो कारण, और उसमें भी कौन सी चीज ज्यादा है, कौन मतलब यिन ज्यादा है कि यांग ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो, और कम है उसकी वजह से तकलीफ बड़ी हुई है, तो यिन कम है कि यांग कम है, नहीं, या यिन Yes. और यांग दोनों कम है। रोग के केवल 5 कारण होते हैं। There are numerous diseases, infinite number of diseases, but the causes for the diseases are only 5. कैसे पता करें? How should we go? उसका एक नियम है। उसका नियम ये है, हमारे शरीर में बहुत से सिस्टम्स है, जैसे स्केलेटन सिस्टम, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, या जैसे एडिपोज सिस्टम, फैट सिस्टम, then comes cardiovascular system, and then comes ligaments and muscles, nerves, nervous system, endocrine system, ठीक है ना? तो इसका नियम क्या है? The law by through which we will proceed is that first you should identify कि जो रोग है, डिजीज है, the disease, which system is affected. Okay. Please write it down. This is from Regional Diagnosis 1. We have done it. The others have done it. You have not done it.
And the second step is that you reach the location of disease. And the third step is that you treat the energy. Now, energy has to be treated through the acupoints on meridians. ट्रीट एनर्जी को कैसे करेंगे? जो हमारे पास मेरिडियन में पॉइंट्स हैं उन्हीं के माध्यम से करेंगे। तो जब हम लोकेशन में पहुंच गए, लोकेशन में कैसे पहुंचते हैं? रेंटिंग के माध्यम से और फ्रंट शू बैक शू के माध्यम से। फ्रंट शू बैक शू हम लोगों को बताता है कि हमें यिन लेना है, यांग में यिन लेना है या यिन में यांग अगर लेना है तो हमें फ्रंट शू बैक शू पॉइंट यूज करना पड़ता है। यांग में यिन, यहां भी यिन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, गांठ हो सकती है, यिन है। और यिन में यांग हो सकता है, पैर के घुटनों में यांग हो सकता है, कम या ज्यादा। नहीं, ऐसे समय में वी हैव टू यूज फ्रंट शू एंड बैक शू पॉइंट्स, but the method is same, renting. So we have to reach the location, and once you are at the location of the disease, then according you have to identify the imbalance, which energy is more, which energy is less, and accordingly out of the 6 kinds of energies on the meridians you have to sedate and tone. So which meridian you should take for that particular location? What is the energy of that location? You should know. Which meridian will govern the location of disease? How will you do that? For वो that, जहाँ we are now trying to divide body in so many ways. I am going to show you at least 25, 30 ways now within 2-3 days. And it can be more than that, you can imagine. Okay. Once you know the principle that how to divide the body and why to divide the body. समझ में आ रही है अब? Are you हाँ getting? सर, yes So yes once you yes know which meridian we have to take, then in that meridian, treat the energy. Sedate, heat, tone, cold or cold, sedate, cold, tone, heat, all that you can do. Okay sir, okay, got it. Reaching the location, you have to rent. If you want yin and yang, yin in yang, you have to go to front shoe, back shoe. If you want yang in yin, you have to go to front shoe, back shoe. All this will happen. But this you will learn slowly as I go ahead. Some of Okay sir. you have already done part 1 of diagnosis, regional diagnosis. They know it a little bit and they will be revising with you. Okay sir. पल्लवी ठीक है? ये मैंने ठीक कहा? कुछ गड़बड़ रह तो नहीं गई कोई बात? ठीक है, समझ में आ गई है? हैं? हाँ या ना भाई? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलो ठीक, कोई। सोनिया, इज इट ऑल राइट? हाँ, अच्छा, आवाज किसी की नहीं आ रही, आप भी? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. आ It's clear. गई, आ गई, आ गई। यू वर म्यूटेड। कल हम लोगों ने बात करी 2 प्रकार से कर सकते हैं हम बॉडी को डिवाइड। एक हमने क्या किया था, लेफ्ट साइड सारा यांग है और राइट साइड सारा यिन है। कैसे किया था? बीच में डायफ्राम है, बीच में डायफ्राम है, तो डायफ्राम है और ऊपर से नीचे तक एक लाइन हमने कर दी, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और नीचे का हिस्सा तीसरा। तो दूसरे हिस्से में ये हाथ और ये वाले हिस्से में ये हाथ, इस साइड में ये हाथ, इस साइड में ये हाथ। नीचे वाले हिस्से में एक पैर एक तरफ, दूसरा पैर दूसरी तरफ। तो 3 हिस्से इधर हो गए, 3 हिस्से इधर हो गए, 6 एनर्जी हो गई। लेफ्ट में क्या हो गया? विंड, हीट, हॉटनेस। राइट में क्या हो गया? ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। पहला ये था। दूसरा क्या था? दूसरा हम लोगों ने किया था, लेफ्ट में
केवल पैर को ले लिया, ट्रंक को नहीं ज्वाइन किया। ओनली लेफ्ट साइड वी टुक ओनली लेग, दैट वाज विंड। लेफ्ट हैंड ओनली, केवल लेफ्ट हैंड, वी टुक हीट। होल ऑफ द हेड एंड नेक, हॉटनेस, पूरा सिर और गर्दन, ये हॉटनेस ले लिया। देन राइट हैंड as dryness. Trunk we took as humidity. Why humidity? Transition. Yang side left है, yin side right है, दोनों को जोड़ने वाला trunk है. Left is yang, right is yin, and both left and right are joined with the help of this trunk. Therefore, we call this as humidity. Transitional phase. Right? So this was hotness, this was humidity. ये hotness था, ये humidity. Right hand, dryness, right leg, coldness. We did another kind of division in which we separated the front and back. फ्रंट में हमने वैसे ही किया जैसे हमने अभी आपको बताया, ऊपर दो तरह से कर सकते हैं। बैक में यांग है तो हॉटनेस की जगह पे क्या चला गया? ह्यूमिडिटी चली गई। विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, हॉटनेस नहीं, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, राइट। और फिर क्या किया? ड्राइनेस, कोल्डनेस लेग में रखा और कोल्ड को यहां रखा। बिग डिफरेंस बैक में। when we are going through yang, the distribution is a little different. In place of hotness we put humidity, and in place of humidity we put cold. Okay, this what we did yesterday. The next, I told you something about the status of different parts of body. How did I tell you? I let you know that these elements or phases are evolutionary phases of a process. Evolutionary phases of a process. So wood, fire, earth, metal and water, they are different phases of a process, right? In our body, when we are dividing the body in different energies, they are representing a certain kind of chi. Wind is chi, heat is chi, hotness is chi. So what kind of chi is governing the function of head? Hotness. What kind of chi is governing the function and everything in the hand? Is heat. What kind of chi is governing left leg? Wind variety of chi. So that is the status. Then I told you yesterday that when you have disease, जब आपके शरीर में रोग है, and suppose जो कंडीशन आपके शरीर में एक जगह नहीं है, कई जगह है, similar condition. When you have similar condition at different places in your body or limbs or anywhere, you have to allot all those places same status, same phase, same energy. Yeah, because they are same. They are similar.
एग्जाम्पल हमने दिया था नी पेन का. इफ योर लेफ्ट लेग इज अफेक्टेड, so you will go to the wind energy and wind meridian, and then you will do the treatment, right? But suppose both legs are affected, then both legs should have only one energy, same energy. Can you think of a division where both legs will have same status, either wind or heat or hotness or humidity, dryness or coldness, out of the six? If both legs are similarly affected, दोनों लेग में एक ही प्रकार की बीमारी है. Are you getting it? Amini. Yes, sir. How should we divide so that both legs will be allotted the same energy? केतन भाई, समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर. अब हमें सोचना होगा. लेट अस सी. एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, फिर आगे चलेंगे. हेड एंड नेक, बोथ हेड एंड नेक, या केवल हेड? नेक इज Something another Chinese. kind of. हाँ जी, क्या? आई कुडंट Sorry, लिसन. sir. ना, आई कुड नॉट मेक आउट क्या कह रहे हैं आप. No, sir. कुछ नहीं. Hotness is head, heat is neck and throat. Heat is neck and throat. Both hands
देखिए, just look at it. If suppose both legs are having similar disease, same problem, that means both the legs belong to the similar status. Their energy imbalance is same. So they have to be allotted one energy, whatever you want to allot. So one of the methods is this. What is this? If both are allotted same energy, if we want to, then we will have to go through अभी तक so far we had seen cyclical distribution of chi, allotment of chi. Now what we are seeing? Linear distribution in the body. Medically, when there are two kinds of diseases, rather three we should say, the disease expands vertically and the diseases that expand, that progress horizontally, and there is a mixed variety. We have to be very careful to see. Mostly the disease or ailments that progress horizontally are medically put in a category of allergy. Anyway, that is a different thing. The more knowledge you have, better it is. But this is a possibility that it can go horizontally. Both legs are affected. Both hands can be affected. Whole chest, left and right, can be affected. Whole lower portion of the body can be affected. Can you see this? And can you appreciate this division? सर ये वर्टिकल ओरिजेंटल क्या कहा आपने? डिजीज जो है हमारे बॉडी में जो आ जाती है और कुछ डिजीज प्रोग्रेस करने लगती है, बढ़ती जाती है। शुरू हुआ, बढ़ता जाएगा। पैर में पेन शुरू हुआ और पूरे पैर में नीचे तक चले जा रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक या नीचे से लेके ऊपर तक। इसको कहते हैं वर्टिकल प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। नहीं समझ में आ रहा है? प्रोग्रेस का मतलब समझ में आता है ना? हाँ समझ गया समझ गया। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? दोनों कूल्हों में दर्द है, दोनों जांघों में दर्द है, दोनों घुटने में दर्द है, दोनों तरफ है, पूरे इधर से इधर फैल रहा है। यहां भी हो रही है इचिंग और यहां भी हो रही है इचिंग। ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट प्रोग्रेस हो रहा है। डिजीज यहां आई, फिर यहां आ गई। ये मेडिकल स्टूडेंट्स को ज्यादा मालूम है। डॉक्टर अपर्णा में बी नोइंग बेटर और डॉक्टर शाह मस्ट बी नोइंग बेटर। आपको नहीं भी मालूम है तो आप ये सोच के चलिए कि जब डिजीज आपको दोनों तरफ लेफ्ट राइट में दिखाई दे तो हमें कैसे जाना होगा? ऐसे जाना होगा। नहीं, केवल एक साइड में दिखाई दे रहा, एक साइड में नहीं दिखाई दे रहा। साइक्लिकल में चले जाओ, इसका अलग कर दो स्टेटस, इधर का स्टेटस अलग कर दो, लेफ्ट में यांग राइट में यिन कर दो। लेकिन दोनों में जा रहा है तो टॉप में यांग बॉटम में यिन कर दो।
केवल बैक में जा रहा है तो फ्रंट में यिन, बैक में यांग कर दो। Am I making my point all right? Am I clear? Is it making some sense? Yes. Dr. Aparna, you must be appreciating. You know all this. Yes, sir. I am also understanding now. एक तरफ के दांत में दर्द है, दूसरी तरफ नहीं है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओरल कैविटी को? साइक्लिकल साइक्लिकल। दोनों तरफ दर्द है, फीलिंग है। ओरल कैविटी को डिवाइड कर सकते हैं, आंख को डिवाइड कर सकते हैं, कान को डिवाइड कर सकते हैं, गर्दन को डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी पोर्शन को हम डिवीजन कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है अभी, मोटी बात? नाउ वी विल गो एंड आई शैल शो यू हाउ वी कैन डिवाइड, बॉडी को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं टू सूट आवर ट्रीटमेंट प्लान। Looking at the patient, looking at the disease and its location, then we decide how to divide our body or a part of body. Once we have divided, we can allot energies to every part. And the principle is same. Identify the system, reach to the location, and treat the energy. Only 3 steps. So we are trying to see how in different ways we can allot different energies to different parts of our body. ठीक है? हाँ सर। Now suppose 2 ways we had seen. In cyclical distribution, we had seen 2 ways. In one of them, we take whole head and neck as hotness and trunk as humidity. And in other, we divide our head into 2 portions. One side is hotness, the other side is humidity. Then this can be further divided between front and back. Okay. Is it all right? See, I shall give you an example so that you will understand it better. इसको निकालूं? यस सर। ये हमने आपको लेवल 1 में भी दिखाया था।
Now, who will tell me the energies? This is front. Can anyone try? Yes, sir. हाँ बताइए सोनिया जी. The left bottom will be wing. Then This is above 1 minute. Let me write. This is wind. wing, heat, Heat. humid. Yes, sir, humidity. Then cold, क्या? Cold. ड्राइनेस है. Who said dryness? केतन. क्या होगा यहाँ? ड्राइनेस है. Dryness. What will come here? कोल्डनेस. say cold. क्या आएगा? Coldness is more yang as compared to cold. ठीक है? Yes, sir. Suppose in a lady, only one breast is affected. एक ही ब्रेस्ट में गांठ है या कुछ भी है. This can do very well. Wind, heat, hotness, humidity, dryness, coldness. हॉटनेस और ह्यूमिडिटी में दो ब्रेस्ट, एक हॉटनेस है, एक ह्यूमिडिटी है. बट सपोज यू हैव both breasts involved. What should you do? So we'll opt for linear distribution. फ्रंट हाँ, साइड ही. वेल सेड. एकदम ठीक. तो समझ में आ तो रही है आपके? ये फ्रंट है और बैक होगा. नहीं, फ्रंट और बैक. फ्रंट में ही है ना ब्रेस्ट, बैक में तो है नहीं. अब क्या करें? कैसे डिवीजन करें सोनिया? Sir, back is yang, तो back में wind, heat, hotness आएगा. यस. फिर फ्रंट में आगे ह्यूमिडिटी आ जाएगा, तो ह्यूमिडिटी ब्रेस्ट वाला एरिया हो जाएगा. If I'm right. वेरी गुड, वेल सेड. Thank you, सो sir. बहुत अच्छे. नाउ इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड इट, it's good. So 3 energies in the front and 3 energies in the back. So the top front will be which energy? Humidity. Middle will be Dryness and coldness. back. Back में क्या होगा? In the back you will have wind,
लो बैक पेन है, तब क्या करें? You can do this in case of breast. But there are other ways also. All the 6 energies in the trunk in the front and all the 6 energies in the back. इसको निकालूं? सर सर एक बात पूछनी थी सर, इसमें फ्रंट साइड ही सारी एनर्जी लोड नहीं कर सकते? छह छह एनर्जी हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं. You दोनों can ब्रेस्ट? have all the 6 energies in the front and all the 6 energies in the back also. Depending on what is the disease, how it is spreading, right? What are the alarm points? What are the symptoms? Chalo, so all the 6 energies, how will you divide? साइक्लिक साइक्लिक में देनी है, और आगे ये ना आएगा, पीछे ही साइकिल आएगा। में भी कर सकते हैं, साइकिल में तो किया ही हुआ है हमने. और अगर हमको लीनियर करना हो, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर रहा है डिजीज, तो क्या करें? ऊपर हॉटनेस और नीचे हाँ यूरोजेनाइटल एरिया, दैट विल बी कोल्डनेस. बाकी में 4 हिस्से. So the lowest is heaviest and most yin. Highest is most yang. ठीक है ना? अब बिल्कुल लो बैक पेन एक बड़े एरिया में हो सकता है और एक छोटे से एरिया में हो सकता है. बिल्कुल छोटे से एरिया में है, बिल्कुल नियर द यूरोजेनाइटल एरिया के जस्ट ऊपर, बिल्कुल गोल पीछे L5 के पास. We can have it as cold, then coldness, then dryness, then wind, then heat, and then humidity. Right? But if there is a horizontal strip pain in the low back, what we can do? If it is in the whole area, we have to take whole area. But if it is on, suppose on the left side or right side, then we can take the same on the back only. 6 we can make. 3 wind, heat, hotness, or wind, heat, humidity, and dryness, coldness, and cold on the back. And accordingly, we can treat. फिर से बताए तो कमर का, फिर से बताए कमर का क्या बोला? There are 2 methods. What are the 2 methods? Okay, let us take कमर का दर्द. बहुत कॉमन है, बहुत पेशेंट आते, घर में रहते कुछ ना कुछ ओल्ड पेशेंट. Let us take कमर का दर्द in detail. No problem. Take the formula and go home. Okay, that's good. हटा इसको दीजिए। निकालूं? यस सर।
What is this upper line? Which level is this? ये कौन सा level है? Which level do you imagine? Ketan. Diaphragm. diaphragm. And what is this level? Navel. So you can have 3 segments on the back and 3 segments on the front. So what will you have here? Wind. What will you have here? Heat. What will you have here? Hotness. What will you have here? Humidity. What will you have here next? Dryness. Dry. Cold. So if low back pain, if you have only in the back, no effect in the front, and it's quite low below the navel, you can choose wind. What are the meridians that you can choose? Liver Liver or bladder. and Gallbladder. why I am writing gallbladder? Because you have options. The pain can be due to 2 things. What are the two things? Either excess of chi or deficiency of chi. Let me look at your faces. Put on your cameras. Low back pain, wind hai. Which meridian you should choose? Liver or gallbladder? Gallbladder. Who said it? You said it, gallbladder. Why? क्योंकि वो वहां से पास हो रही है सर. Gallbladder is on the flanks. Meridian is on the flanks. I don't deny. You can be right. In some cases, it will be gallbladder. In some cases, it will be liver. That is what I want you to understand. Energies you will have to understand. See, diagnosing, identifying, and then treating. It can be liver, it can be gallbladder. When Sir, will you if- have liver and when will you have gallbladder? So if the lower back is stiff, इतना जो हम लोग अभी पीछे 4 दिन करते रहे, पूरा हम लोगों ने डायग्नोसिस सीखा. सबसे पहले क्या हम देखेंगे? Whether this is due to excess of chi or it is due to deficiency of chi. नहीं, भामिनी, Yes sir. Shiva. Low back pain, you will have to first find out whether this pain is because of excess of chi or because of deficiency of chi. Isn't it? Yes, sir. Suppose this is because of, क्या करता है वो, जब कमर में दर्द होती है तो बोलता हमको थोड़ा प्रेस कर दो. बच्चों को बोलता पीठ के ऊपर चढ़ जाओ.
then we know that this is due to Deficiency. deficiency of chi. Okay, so deficiency. Now, deficiency, there are three options. What are the options? Yin क्या options? deficiency, yin deficiency, yang deficiency, or both deficient. How shall we know? That I don't know. If it is yin deficiency and the person walks and works, household chores हो चाहे बाहर का चोर हो, the pain should increase or decrease? Dr. Shah, आप बता सकते हैं? इंक्रीज होगा सर। Yes. If it is yin deficiency and you are walking, what will happen? The pain will Increase. Increase. So, pain increases on walking. That immediately gives you yin deficiency. First, you have decided that this is because of deficiency. नहीं तो deficiency होना होगा तो प्रेस करने से जल्दी से नहीं जाएगा पेन. कैसे जाएगा? You applying oil and massage. Oil is yin. Oil is Yeah. yin. So applying oil massage gives you relief. That means it is yin deficiency. सर अगर पेशेंट को पेन हो रहा है और हम उसको हीट दे रहे हैं, वॉकिंग में भी पेन हो रहा है उसको, बट हीट देने में बेटर फील कर रहा है, तो हीट देने से बेटर फील कर रहा है, माने इट इज अ केस ऑफ एक्सेस. व्हाट इज एक्सेस? yin It excess. can be yin excess, it can be yang excess. Either yin excess or yang excess. अगर yin excess है, yin में मतलब the pain is so much that the patient is unable to really walk. बहुत ज्यादा पेन है. yin excess होगा तो activity will be tending to zero. Retardation होगा, occlusion होगा, ऑब्स्टकल होगा, रेजिस्टेंस होगा. ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी है पिछले 4-5 दिनों में. डॉक्टर साहब, यस सर, यस सर. तो yin एक्सेस है, हीट करो, रेडिएशन डालो. कोल्डनेस है, हॉटनेस डालो. ओके सर. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है डॉक्टर साहब? यस यस आ रही है. यांग एक्सेस भी हो सकता है. चलने से भी पेन है, दबाने से पेन है, दबाने से पेन है, चलने से भी पेन है. और क्या हो रहा है? इट इज, इफ यू वॉक इट स्प्रेड्स. सर भुजंग आसन में उसको अच्छा लग रहा है. 1 minute, Dr. Shah. Yin excess, the pain will not expand. It will not, the area of pain will not grow. But yang excess, the area, pain area will grow as the yang increases. The area will also expand. नहीं समझ में आ रही है बीवी? पल्लवी, तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes. Sonia, is it all right? Not all right. There can be two things. Let us take excess condition only. We will take deficiency later. Either yin excess or yang excess. How shall we know? Through symptoms. Through symptoms. If it is yin excess, yin का नेचर क्या है? Contraction. yin का नेचर क्या है? Stationary. Same place. It will remain there. It will not go. It will not move. Yin is no movement. Yin is No movement. no movement. And yin is a responsive force. Yin is a
A responsive force. How it responds to whom? It responds to yang. So if you walk, the pain intensity will increase, but area will not increase. Why you are not understanding? It's very clear. Now it is clear, sir. सर हिंदी में बता दीजिए। सोनिया जी हिंदी में बताइए। यिंग जो है वो नो मूवमेंट है, जो यांग है वो एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन है। तो अगर यिंग एक्सेस होगा Yang is तो movement. पेन Yin is no movement. Yang is movement. तो यिंग जो है इज द रिस्पॉन्सिव फोर्स, अगर यांग को रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर यिंग में अगर मूवमेंट होगा तो पेन ज्यादा हो जाएगा, बट द एरिया, जिस एरिया में पेन है वो पेन उतना ही डिफाइंड रहेगा। लेकिन जैसे ही मूवमेंट करेंगे तो पेन और ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एरिया नहीं बढ़ेगा, एरिया उतना ही रहेगा। एरिया होता तो yin एक्सेस है। और यांग में एरिया बढ़ जाएगा। यहाँ तो Yes. मूवमेंट है ना, जैसे ही बढ़ोगे तो मूव करेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ते जा, एरिया भी बढ़ेगा, पेन भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ पेन भी। और वो कैसा होगा? वो फैला हुआ पेन होगा। और यिन में कैसा होगा? पिन पॉइंटेड पेन होगा, फिक्स्ड एरिया में पेन होगा। पेन कैन बी ऑफ 6 वेराइटीज। पेन कैन बी ऑफ 6 वेराइटीज। विंड वेराइटी ऑफ पेन कैसा होगा चेतन? आता जाता रहेगा। प्लेस भी चेंज हो सकता है, टाइम भी चेंज हो सकता है, जा सकता है फिर आ भी सकता है। हीट में कंटिन्यू रहेगा। हीट, हीट वाला पेन कैसा रहेगा? कंटिन्यू रहता है वो। कंटिन्यू रहता है और एक्सपैंड करता है। एरिया कीप्स इंक्रीजिंग, इट कीप्स गोइंग। शुरू थोड़े एरिया से होगा, फिर बाद में बढ़ेगा। हीट मस्ट ग्रो, ग्रोथ। हॉटनेस, हॉटनेस में डिजीज कहीं और होगा और some लक्षण कहीं small और। area, distant area can be painful, and that will disturb some other thing, not really the movement of that only, but some other thing, some आंखों में प्रॉब्लम, आंख कान में प्रॉब्लम, पैर में प्रॉब्लम, यूरिन में प्रॉब्लम, कहीं ऐसा, that is hotness। कहीं रहेगा, कहीं उसका इफेक्ट होगा दूर, अवे फ्रॉम द सोर्स। सो साथ में कुछ और प्रॉब्लम लेके आया है तो हॉटनेस है, और स्मॉल एरिया में कहीं पे है, दैट इज हॉटनेस। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? पेन, ह्यूमिडिटी वैरायटी ऑफ पेन कैसा होगा? joints. पूरा भाग लोकलाइज मीठा होगा। दर्द, मीठा दर्द। हैव यू हर्ड? माइल्ड हैवीनेस, आलस के जैसा, ऐसा 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 करे थोड़ा अच्छा लगेगा, यू विल फील अ लिटिल बेटर, इट फील अ लिटिल बेटर। लेकिन पेन रहता है, ठीक नहीं हो रहा, आज पूरा दिन ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आई कैन वर्क, आई कैन वर्क एंड थोड़ा कम करेंगे मूवमेंट, थोड़ा लेजीनेस रहेगा, बट आई विल डू। ड्राइनेस पेन, व्हाट काइंड ऑफ पेन दैट विल बी? कोई एक जगह Dryness variety of pain, फिक्स it जगह will पर have पेन a रहता clear cut boundary, no pain after that boundary. Boundary will not be pinpointed, it will be a little bigger, so it will be within that boundary, and the boundary will be fixed, either it will shrink nor it will expand. That is dryness variety of pain. What is coldness variety of pain? स्टिफ हो जाएगा कोई जगह पेन। Pinpointed, like a pin, like a needle, and very pierce, and it will be so painful that you will not be able to function, you will not be able to work. So painful. So these are the 6 varieties of pain.
आराम से, if you have the cool of your mind, when the patient comes, you are not in a hurry to give the response. Give enough time to the patient. Learn everything from the patient. See everything. Touch, palpate, ask, see, and then decide what you can do. The method is same. First, you have to find out whether it is due to excess of chi or deficiency of chi. If it is because of excess of chi, find out whether yin is excess or yang is excess. Unless you know yin and yang, you will not be able to do. yin और yang हम पढ़ाते रहते हैं, सब लोग कहते खाली yin yang ही पढ़ाते सर आप. यू आर ओनली टीचिंग yin yang. मैं क्या करूं? बिना yin yang का कितना भी एडवांस कर लो नहीं होगा काम. फॉर्मूला मैं देता नहीं हूं. आई डोंट गिव यू फॉर्मूले. You have to generate your own prescriptions and protocols. For that, you have to know what is yin and what is yang, and how to differentiate, how to find out. Am I making some sense? Yes, sir. चेतन भाई, अभी समझ में आ रहा है लो बैक पेन का? हाँ समझ में आ गया, वो एक मसाज वाला और वो कभी शेक वाला। एकदम गॉल ब्लैडर का. अभी क्या है, मान लो यिन है और आपको आ रहा यांग, तो यिन एक्सेस है और यांग है ना. आपको, आपने समझ लिया क्या है यांग है, तो आपको गॉल ब्लैडर यूज करना पड़ेगा. मान लीजिए आपने 6 डिवीजन किए, आपको यांग, तो यांग कहाँ रहेगी? लिवर में रहेगी कि गॉल ब्लैडर में? ज्यादा यांग कहाँ रहेगा? गोल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में रहेगा. आपको गॉल ब्लैडर मेरिडियन लेने पड़ेगा. लेकिन उसमें यिन है, तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन में यिन है ना अपने पास. कोल्ड है, कोल्डनेस है, ड्राइनेस है, ये पॉइंट्स है कि नहीं है? एंड प्लस यू हैव बीजी मेरिडियंस विद यू. हॉरिजॉन्टल बीजी मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल गॉल ब्लैडर मेरिडियन. ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, तो ह्यूमिडिटी तो यांग हो जाएगी. तो ड्राइनेस, कोल्डनेस एंड कोल्ड, 3 पॉइंट है. सेलेक्ट ए पॉइंट, सेडेट. ठीक है ना? यिन कहाँ रहती है? लिवर मेरिडियन में. यांग कहाँ है? गॉल ब्लैडर मेरिडियन. बट इफ यू थिंक नो नो इट इज वेरी यिन, what will you do? Go to the front shoe point of gallbladder and then go to the liver meridian. हम बताएंगे आगे, डोंट वरी, आई विल टेल यू. आगे इसके भी एग्जांपल्स लेंगे. वी विल टेक एग्जांपल्स. बैटरी इज गोइंग. आज बैटरी जा रही है, खत्म हो रही है. आई हैव नॉट चार्ज्ड इट, सो आज के लिए बस करें, कल करते हैं. काफी बोलना हो गया. आई हैड टू स्पीक at the top of my voice. So if you have any questions, we will Yes, do the sir. question answer and then we will leave. Sir, I need a clarification.
Yes, go ahead. Speak loudly. So first, we are applying, like say, energy selection based on pain location as well as either circulation or linear. Based on that, we are deciding how the energy needs to be selected. So, for example, here low back pain, we decided this is a circular, and from the back side of the location, we start the energy like wind, and so that we decided the energy as wind. Then we need to identify either excess or deficiency of yin or yang. So the approach how we are doing is by asking the question of patients like what is kind of pain you are getting it. Either it is like say when you walk or when you are sit idle and then when you move, like that, asking the questions, get the pain in details, and then we need to decide either excess or deficient, and then we need to pick the points or obvious. I want to complete this one flow. What complete flow? Like selecting the point, like say, how are you treating this disease? Unless you, anything, any ailment, any medical condition, if you want to treat through acupuncture or acupressure, you will have to bring it in terms of yin yang. There is no other way that I know of. You must know how to differentiate whether it is yin or yang. That is your baby. We have been doing it in level 1, level 2, EOV. So many, whichever BG meridian, whichever course I did, always I have stressed upon yin yang, yin yang, yin yang. If you have not understood, come back again. This is Sir. not the class to tell No. you how shall you know, differentiate No. whether it is a yin variety of pain or yang variety of pain. This I am only helping to revise you the total thing, the flow, the way you want a full course class. You No, have sir. to come back. Sir, my question here is say for example, this is a case like low back pain. So The how do only we thing in treat? this class is how to divide the body, how to allot various energies. So there are, if it is in the central strip, horizontal, low back pain, you can divide 3 yang energies on the back and 3 yin energies in the front, if front is not painful. If the front is not painful, only the back is painful, then wind, heat, hotness, humidity, dryness, and coldness. So you to can decide divide this, three energies on the back and 3 energies on the front. how are you deciding is because the patient says that I am having only low back pain. Based on the question that we are asking and getting the answer from the patient, we are deciding this. Am I right? Yes, you are right. Okay. So like we have to ask like similar questions based on the symptoms, what they are saying by word. You Based have on to that, ask question. You have to touch the patient, feel, palpate. You have to smell and you have to see. These are the 4 methods of diagnosis in TCM. yes, sir. So now if you take this form, like say low back pain, like that's what I want to complete, like say, take one scenario, that's what like, how do we approach as a treatment methodology? That's what I want to clarify. I have been telling this. Very difficult. You have to first decide whether the pain is because of excess of chi or deficiency of chi. Right. Point number 1. Write it. Okay. So there can be 2 possibilities. Either it will be due to excess of chi or it will be due to deficiency of chi. Find out that. I am not going to tell you the method. You have to find it. Okay, sir.
Okay, sir. If it is due to excess of chi, the second step will be, if it is excess of chi, the Okay. second step, find out whether it is excess of yang or excess of yin. This is the second step. Okay. Okay. Once you know whether it is excess of yang or excess of yin, then you have to know yang is generated by which organs. There are 3 organs in the yang family and 3 organs in the yin family, number 1. Plus the location wherever the pain is, which meridians can affect it. That also you have to see, isn't it? So you will have to decide yang of what? Which are the 3 organs of yang family? Shiva? Yang family. There Okay, are sir. 6 generating organs. There are Yes. 6 Generating organ. organs. With 3 organs are in the, they produce more of yang and less of yin. And 3 organs produce more of yin and less of yang. Which organs are producing yin, yang? So sorry, sir, I could not hear last. Could you please repeat? There are 6 generating organs. You know them? Yes, sir. That all the solid organs are generating organs. True. Okay. Okay. So, how many solid organs do you have? 6. Which are they? Okay, sir. Heart, pericardium, kidney, lungs. Pericardium is an organ, do you think? Pericardium is not an organ, that is a controller. Okay, so solid organs are 5 except pericardium. So kidney, spleen, lungs, There are heart, 6 and generating organs, Shiva. You don't know it. Let someone else tell me. So there are 2 kidneys? Yes, you are right. okay, kidney 2, say water kidney and like say fire kidney. Okay, if you say like that, kidney is 2 means then 6. Yes, yes, sir. Yeah. Yes, sir. So, which are the organs which are generating yang chi more than yin? Liver, spleen, and left fire kidney. Very good. Well said. बहुत अच्छे. So, if it is yang excess, first doubt, is it because of yang kidney? Because low back pain can be related to kidney also. Low back pain can be related to gallbladder also. If it is yang, liver, if liver is yang, gallbladder is also very yang. It cannot be stomach. Why? Because stomach meridian is in the front. And front the patient has no issues. Right? So you will have to find out. Once you know whether this is excess or deficiency, then you will have to identify whether it is yang excess or yin excess. If you know yang excess or yin excess, you will have to then decide which meridian you have to treat. And then sedate yang and tone yin. That is the treatment. If it is a case of pain due to deficiency of qi, you will have to find out whether it is deficiency of yang or deficiency of yin. Or it is a deficiency of both yin and yang. Okay. And then accordingly, you have to identify which meridian, and accordingly you have to treat. Yin, you have to tonify yin or yang, whichever is deficient. And if it is both, then you have to tone both yin and yang. When you take both meridians, yin and yang, the couple meridians, that means you are going to affect the quantity and quality both at a time. Okay? When yin and yang both are deficient, that means the total chi is deficient. That means the 2 meridians you have to
treat yin meridian and yang meridian both. So this is the whole flow chart. Sir, in this, how the energy selection is coming to the picture? You have to select. You have to see which meridians are going. You have to see the whole table. We have studied table 1, table 2, table 3. We have done so many things about the energy. What is what kind of food, what kind of taste, what kind of mental format, what kind of digestion, everything, what kind of thirst, so many sweat, hunger, sleep, so many things. We have already discussed it. In level 1 and level 2 we discussed, and we have discussed even in the past 4-5 days, we have discussed very much in detail. We made a whole table also, and then again we discussed the next day, isn't it? Yes, sir. And then again you are asking the same thing. How to know the energy? Right now we have discussed pain of 6 variety. And for each variety, there are 2 meridians. Once you know the variety of pain, only 2 meridians are there, yin meridian and yang meridian. If you need yang energy, go to the yang meridian. If you need yin energy, go to the yin meridian. Hello, Shiva. Not very difficult. Don't think it is very difficult. We have just now discussed 6 types of pain, haven't we? Yes, sir. So once you know which variety of pain is there, and once you know whether it is excess or deficiency, and if you know whether it is excess of yin or excess of yang, or deficiency of yin or deficiency of yang, then accordingly you can select the meridians. Simple. If yang is excess, sedate yang. If yin is excess, sedate yin. If yang is deficient, tone yang. If yin is deficient, tone yin. Kya hai? Right? So first step, find out whether it is due to excess or deficiency. Second step, if it is excess, whether yang is excess or yin is excess. Right? If it is excess, what variety of pain is, what variety of problem is there? Is it yang variety or yin variety? In yang also, whether it is yang wind or yang heat or yang hotness or yang humidity or yang dryness or yang coldness. But especially with the knowledge that there are 3 organs which belong to yang family and 3 organs which belongs to yin family, we are capable, immediate doubt, if it is yang, the 3 organs, the 3 meridians. First doubt, it can be the other one also. The other 3 which are producing mostly yin, that also generates some yang. So don't miss it. All the 6 you have to see, but keep in mind, I mean, it's preference. Because if there is a problem of yang, then we have 3 organs and each organ will have 2 meridians. Make notes. You'll forget. Yes, sir. And come back again in level 1 and level 2. Don't miss it. Even those who have gone to very higher studies, they must keep repeating. I remember myself, I had paid fees and attended 26 basic trainings. I still remember and tell my students. I keep telling. 26 बार केवल बेसिक करी थी उस टाइम में. इतना nobody was there to teach like I am teaching you. इतना कोई बताने वाला नहीं था भाई. Someone any one of you have done some classes from Prayagraj Sansthan? Yes, sir. Do they tell so much of detail? Nothing, sir. नहीं, Nothing. नहीं, ये कुछ बता दे नहीं क्या सर, कोई? And कुछ that नहीं. training I repeated 26 times because nobody was clear. Neither teacher was also not clear. I was always trying to find out kaise hoga, how, answer not coming. I am taking full pain, telling you everything. Time and again, repeating.
You will have to come up. And don't hesitate in repeating. When you repeat, if you have done already a course, 50% nearly discount, because 4,500 is the fees. I charge only 2,500 for those who are repeating. I know repetition gives you extra knowledge. Because I So also can I speak a ask a little different question? language. Every class, the language is different. So I have told you this. Any other question now? Or shall we close? Because it is already nearing 9:28. Shall we close it? Yes, sir. And Yes, sir. tomorrow again you have chance to ask questions right in the beginning of the session. Right? Don't hesitate in asking. You can ask anytime. Right?